Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. So today I will discuss mixtures and alligation part 3 here. So before that we have already covered part 1 and part 2. So I will request you and I will recommend you also kindly watch all the two parts before watching this part 3 because this part 1 and part 2 are the base of this topic. Fine. तो देखिए आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 डिस्कस करने से पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वहां से जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए प्लेलिस्ट में। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर कुछ आज हम टायर 1 एसएससी और टायर 2 के क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट, दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन दिस वीडियो इन हिंदी एज वेल एज English. Fine, because a lot of friends of Current Affairs Funda are from South India, that's why I'm making these videos in English as well as in Hindi. क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स में बना रहा हूं. ओके, about us, basically we are delivering free education to all of you, so kindly support us and spread the word among your all the friends, and especially for those people who can't afford the coaching classes, and you know learning is priceless, so please friends, do share our videos. And friends, if you want any specific topic video, then you can give your query on our Facebook page, that is here, Current Affairs Funda CF. This is our Facebook page. Fine. So right now this is first question here of mixture and alligation part 3 here. So friends, I can solve this question in two methods. First of all, read the question carefully. A vessel is filled with liquid, 3 parts of water and 5 parts syrup. How many parts of mixture should be taken out and replaced by water so that the container contains half syrup and half water? That means इन द 1:1 रेशियो. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसमें 3 पार्ट जो है पानी है और 5 पार्ट जो है वो है सिरप. ओके, तो अब हमें यहां पर ये बताना है कि कितने पार्ट जो है मिक्सचर से निकाल लिया जाए और उसमें पानी डाल दिया जाए जिससे दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाए. क्योंकि स्टार्टिंग में 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट सिरप है, इसका मतलब पानी कम है और सिरप ज्यादा है, तो मुझे डालना उसमें क्या होगा, पानी डालना होगा और निकालना क्या होगा, उसमें से मिक्सचर निकालना होगा. फाइन. तो इस क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जाता है कि हाफ सिरप हाफ वाटर हो जाए या फिर 1:1 रेशियो हो जाए. तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड्स लगाऊंगा. बट बेस मेथड is a bit tricky and also conceptual, so kindly see the first of all shortcut method here, how to solve this question with the help of shortcut. So friends, there are basically two things are given, that means we can say 3 part water and 5 part syrup. Question is asking how many parts of mixture, how many part of mixture should be taken out and replaced with water. Okay, so if you need to calculate how many part of mixture, that means you need to calculate how many part of mixture. So just do one thing here. First of all, write half here, multiply with big value, that is your big value, and this is your small value. Fine. So big value minus small value, I need to write a formula for you. Big value minus small value divided by big value. That means half into, what is big value here? 5 minus 3, that means it will be 2 divided by big value, this is 5 here. 2 and 2 will be cancelled out and here we will get 1/5 part here. That means we need to take in 1/5 part of mixture and this should be replaced with water, and after that our ratio it becomes 1:1. Fine, because this is very precise shortcut here, you can use this shortcut in any of the question. Fine.
But if you want to solve this question with the help of base method, okay, so you can do it, but this will be very bulky. I will also use steps to solve this question with the help of base method also. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन को हम बेस मेथड से बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट से आपको बताना चाहूंगा। वाटर जो है वो 3 पार्ट दिया हुआ है, सिरप है 5 पार्ट दिया हुआ है। अब यहां से पूछा है कितने पार्ट मिक्सचर को निकाला जाए, तो मतलब मैं यही आपसे कहूंगा कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपकी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू घटा दो, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाई बिग वैल्यू। तो 5 में से 3 घटाया कितना बचा, 2, और बिग वैल्यू कितनी है 5, 2/5। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/5 पार्ट बच जाएगा। मतलब कि हमें कितने पार्ट मिक्सचर वहां से निकालना है, 1/5 पार्ट वहां से मिक्सचर निकालना है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका बेस मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली आया कैसे। ओके, सो राइट नाउ सी द बेस मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, assume friends your mixture is x liter. Okay, and this x liter consists of two things. First thing is water here, and other thing is syrup. Okay, water is 3 part and syrup is 5 part, so we can say total these are basically 8 part here. So we can say water is 3/8 part of this mixture, that means x, and the syrup, this is also 5/8 part of mixture x. Fine. And when you will combine the both the things, that means 3 plus 5, it will be 8 out of, because out of 8 this quantity is 3 and this quantity is 5, and total combination, that means we can say 8 here. Okay, so water is this ratio and syrup is in this ratio. Okay, what question is asking, how many parts of mixture should be taken out and replaced by water? That means you need to add some water and mixture you should taken out. Fine. And after that, what is the statement here? Container contains half syrup and half water, that means or 1:1 ratio. Okay, so friends, water, syrup. Fine. So what is the total quantity here? 3 water, we are talking about the water, 3 minus 3x/8, and you just need to add some water here, that means we are adding x here, and divided by 5 minus 5x/8. Okay, because we need to add some quantity of water here, so we are adding x quantity also here. Okay, so after multiplying both the two things, you just need to put the value of water and syrup is in 1:1 ratio. Fine. So when you will cross multiply, then you will get here 110x divided by 8, it will be equals to 2. So we can say x, it will be 8/5, and it will be equals to 1.6. So we can say this quantity is 1.6 here, and when you will divide 1.6 by 8, because total quantity is 8 here, so you will get 1/5 part. That means friends, you just need to take the 1/5 part from here. तो आपको यहाँ से कितना पार्ट निकालना है, 1/5 पार्ट को बाहर निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, we will use the basic best shortcut method here, half into big value minus small value divided by big value. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सी हाफ इंटू बिग वैल्यू, दैट इज 5 here, because 5 part is greater than 3 parts, so 5 minus 3 2 divided by big part, that means 5, so 2 and 2 it will be cancelled out, 1/5 part is the right answer. Okay, so I will recommend you kindly apply this shortcut method here. Okay, so this is very precise and shortcut method, and in exams you need to adopt this method only. Exams में आपको केवल यही method adopt करना है. One more example for you friends. A vessel is filled with liquid
4 part of milk here and 1 part of water. Fine. So we can say milk is 4 part and water, this is basically 1 part. In the same way, how many part of mixture should be taken out and replaced by water so that the container contains half milk half water, or we can say 1:1 ratio. So taken part of mixture, it will be equals to half multiply with big value minus small value, that means 4 minus 1, it will be 3, divided by big value, that means 4. So friends, 3 by 8 part should be taken out and after that our your ratio will become 1:1. तो यहाँ से हमें 4 पार्ट तो मिल्क दिया हुआ है और वाटर 1 पार्ट दिया हुआ है, तो पूछा है कितना मिक्सचर निकाला जाए जिससे रेशियो 1:1 का बन जाए। तो देखिए यहाँ से आपने 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 minus 1 3 हुआ और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3/8। तो हमें यही शॉर्टकट यूज करना है एग्जाम्स में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलता है देन। ओके, now let's move for the next question. Friends, this is the master question of the mixtures and alligation, most important. Kindly note down most important and mark asterisk here. Okay, so I will explain this question right now. A container contains 80 liter of milk. Right now in the starting, how much milk is there? 80 liter. Fine. 8 liter of milk was taken out. 8 liter be taken here and replaced with water, and we have added some water, and we have added with water not some water, we have added the 8 liter water. Whatever we are taken out from the container, we are adding the same quantity here also. Okay, so 8 liter of milk was taken out and we have added 8 liter water into that container. So now it becomes mixture. This is not the ultimately milk here. When you have taken 8 liter milk and after that you have insert 8 liter water, now it becomes again mixture of 80 liter quantity. जब आपने 80 लीटर में से 8 लीटर मिल्क को बाहर निकाल लिया और आपने उसकी जगह पर पानी डाल दिया, तो अब वो मिल्क तो नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया. फाइन. दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड बाय 2 times. ओके, then find the following in new mixture. So friends, there are certain things that I am going to explain. First of all, milk is to mixture. We will find this ratio here. How to find this ratio? Milk is to mixture. Mixture, that means milk plus water. How to find this ratio? First of all, we will use a very basic formula. This is just simple. I will explain also. 1 minus a divided by x into 1 minus b divided by x into 1 minus c divided by x. Why? Because first of all we will apply this method and after this process repeated 2 times, that means again and again. Okay, if question is asking this process repeated 3 times, that means you will make this these variables for the 4th time. Okay, so right now what are the a, b and c? A, b and c are the withdrawn quantity. Fine, that means 8 liter of milk was taken out, that means this is a withdrawn quantity. So a is a first time withdrawn quantity and b is second time and c is third time. So a, b and c are the withdrawn quantity here. Fine, and what is x here? X is the total quantity of mixture. Fine, what is x here? X is total quantity. What is total quantity? Total quantity is 80 liter. That is your x here. Okay, so right now apply the same method. 1 minus a, that means 8 liter. So we will use 8 divided by 80 and again multiply with 1 minus b. What will be b? B again be 8. So it will be 8 divided by 80 and again 1 minus 8 divided by 80. Okay, so when you will solve such problems here, so you will get 1 minus 1 by 10, because it will be 10 times 8, 10 times, again 10 times. So we will get 1 minus 1 by 10 from here and it will be 3 times. 1 minus 1 by 10 and again 1 minus 1 by 10. Okay,
So it will be 10 ones are 10, 10 minus 1 9 by 10. So we can say 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10, and it will be 729 divided by 1000. Okay, so milk is to mixture, it will be equals to 729 divided by 1000. Fine. So let me erase this board for you and I will write the final ratio here. So one thing more, देखिए मिल्क और मिक्सचर का अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना है, एक में से घटाना किसको है, जो क्वांटिटी है, और डिवाइडेड करना है टोटल क्वांटिटी से. तो ए बी और सी क्या है, ये है निकाली हुई क्वांटिटी जितना आप मिक्सचर में से निकाल रहे हैं. ठीक है, और x क्या है, ये है आपकी टोटल क्वांटिटी. ठीक है, टोटल क्वांटिटी तो हमारी कांस्टेंट है तो हमने उसको x रखा है, x बराबर कितना 80 है. तो 1 माइनस ए की वैल्यू अगर हमने 8 रखी है 8/80, फिर बी की वैल्यू अगेन 8/80, क्योंकि ये प्रोसेस कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार. तो यहां से हमने 1 माइनस 1/10 मिला, मतलब 9/10 9/10 9/10, इन तीनों की मल्टीप्लाई की, कितना रेशियो मिल गया, 729 डिवाइड बाई 1000. सो राइट नाउ वी कैन सी लाइक दिस वन, मिल्क is to mixture, that is equals to 729 is to 1000. Fine. So what is the mean of mixture? In mixture there are basically two things, milk plus water. Okay, so friends, if milk, this is 729, and mixture, that means milk plus water, this is 1000. So in the mixture, that is 1000 and milk is 729, so we can say what is water here, water, it will be 271. Fine, because if 1000 liter is the total mixture capacity and 729 is the milk, then we can say 271 will be the water here. तो देखिए अगर मिक्सचर 1000 क्वांटिटी में है और उसमें से मिल्क 729 है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 271. Fine. So right now evaluate all these questions here. Ratio of milk is to mixture. That means first answer it will be 729 is to 1000. So we can say 729 is to 1000. That is our first answer. Ratio of water is to mixture. What is water here? 271. So we can say 271 is to 1000. This is your water is to mixture. Again milk is to mixture, milk is to water. What is milk here? Milk is 729, and what is water here? This one. So we can say 729 is to 271. Again concentration of milk. What is the mean of concentration of milk? So friends, whenever you will solve this fourth part, so in the fourth part, concentration of milk, what is the ratio of milk is to mixture, that is 729 is to 1000. So we can say 729 is to 1000 and make it percentage here. So it will be 72.9 percentage. This is the concentration of milk, that means 72.9 percentage. In the same way, concentration of water, it will be to 27.1%, because water is 271 out of 1000. So when you will calculate the percentage, so it will become 271 divided by 1000 into 100, so it will be 27.1 percentage. Okay, and what is the percentage of milk? The concentration of milk and percentage of milk both are the same thing, so it will be 72.9 percentage. And again water, so it will be again 27.1 percentage. Friends, why I write the same thing, why I wrote the same thing twice here? Why? Because I just want to clear the language of the question. If the question is asking about the concentration of milk, then you will write 72.9%. If the question is asking about the percentage of milk, then you will write also 72.9%. Fine. And quantity of milk, what is the quantity of milk? What is total mixture here? Total mixture is 80 liter. Fine. And out of, what is the quantity of milk here? Milk is in 729 divided by 1000 quantity. So what will be the result here? Result, it will be 58.32 liter.
So this is the total quantity of milk. Fine. And now total quantity of water, that means total capacity is 80 liter of mixture. And what is the water here? Water, it will be 271 divided by 1000. This is the ratio here. Okay, so it will be equals to 21.28, 21.68. This will be the capacity of water here. I hope you all are understand this problem. Friends, this is very most important question. That's why I'm giving more emphasis on such kind of problems here. ये बहुत ज़्यादा important question है, इसलिए मैं इसको बहुत आपको बार बार बता रहा हूँ. तो देखिए, अब जब हमें मिक्सचर और मिल्क का रेशियो मिल गया है 729:1000, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था रेशियो ऑफ मिल्क इज टू मिक्सचर, तो वही हो जाएगा. अब देखिए, यहां से मिक्सचर की क्वांटिटी है 1000 और मिल्क कितना है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर होगा. तो वाटर कितना आ गया? 271. तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, मतलब कितना हो जाएगा? 729:271. ठीक है. अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है. कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल मिक्सचर क्वांटिटी में मिल्क किस परसेंटेज में है. कंसंट्रेशन पूछा जाए या टोटल परसेंटेज पूछा जाए, दोनों की दोनों चीजें सेम होती हैं. फाइन. अब अगर पूछा जाता है कि परसेंटेज कितना है, तब भी यही होगा. और क्वांटिटी पूछी जाती है, तो देखिए रेशियो कितना था मिल्क का, मिल्क से मिक्सचर का रेशियो कितना था? ये था 729:1000 का था. यहां पर 1000 होगा. फ्रेंड्स काइंडली करेक्ट इट, इट विल बी 1000 here. 729 डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा? ये 80 टोटल क्वांटिटी है. 80 का ये परसेंटेज कितना है? ये है 72.9%. ठीक है. ये इतनी क्वांटिटी में क्या है? हमारा मिल्क की क्वांटिटी है. ठीक है. ये सॉरी फ्रेंड्स, ये 80 इंटू 729 डिवाइड बाय 1000, ये आपका आएगा 58.32. क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है, ये डायरेक्ट क्वांटिटी पूछी है आपसे. अगर परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज आपका होगा 729 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, मतलब कि 72.9%. ठीक है. और यहां से अगर वाटर की क्वांटिटी पूछी है तो वाटर का रेशियो ये है, और इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी से, तो कितना हो जाएगा? 21.68. ये हमारा क्या हो गया? वाटर की क्वांटिटी. ठीक है. एक एग्जांपल इसके बाद हम और करते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. So this is very similar to the previous one. So pause the video, solve this question by yourself. Okay. But right now I am doing it for you. A 2 liter water of alcohol, 2 liter bottle of alcohol, 1 liter of alcohol is replaced by 1 liter water. This process was further repeated by 2 times. Then find the following thing is mixture. So friends, first of all we need to take the alcohol divided by mixture, that means alcohol plus water. You need to find out this ratio. Okay, because the question is asking about alcohol is to mixture, that means alcohol divided by alcohol plus water. So it will be again 1 minus total quantity is 2, and how much is taken out? 1. Again 1 minus 1 by 2, and this process repeated by 2 times, that means we will take 3 part here. Fine. So it will be equals to half into half into half. So it will be 1 by 8 here. So we can say alcohol is 1 ratio and water, alcohol plus water is in 8 ratio. So we can say water will be 7 ratio. Fine. So from here we have evaluated 2 things here. Alcohol is in 1 ratio and water is in 7 ratio, and total alcohol is to mixture, that is 1:8 ratio. फाइन. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन कहता है कि 2 लीटर अल्कोहल है, उसमें से 1 लीटर अल्कोहल हमने निकाल लिया और 1 लीटर पानी डाल दिया. तो ये प्रोसेस जो है 2 बार किया हमने, तो आपको ये बताना है, सारे रेशियो बताने हैं. ठीक है. तो अगर आपने 2 बार प्रोसेस किया है तो पहली बार तो ये किया था, उसके बाद 2 बार और कर लिया, तो टोटल 3 बार हो गया ये प्रोसेस. ठीक है. तो यहां से अल्कोहल का मिक्सचर के साथ रेशियो कितना आ गया? 1:8 का. तो हम यहां डायरेक्ट केवल एक चीज लिख लेंगे, अल्कोहल इज टू मिक्सचर, दैट मीन्स अल्कोहल प्लस वाटर, दैट इज इन रेशियो 1:8.
8, where water is in 7 ratio. Why? Because alcohol plus water, that is 8 ratio, and alcohol is in 1 ratio, so remaining part, so now remaining part it will be 7 ratio water here. ओके तो देखिए यहां से 7 रेशियो तो वाटर हो गया. पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रेशियो ऑफ एल्कोहल इज टू मिक्सचर, दैट मींस 1:8. सेकंड क्वेश्चन रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिक्सचर, दैट मींस 7:8. Ratio of alcohol is to water, that means 1:7. Why? Because alcohol is 1 ratio and water is in 7 ratio, and total it becomes mixture, that is 8 ratio. Fine, so it will be 1:7. And friends, concentration of alcohol in the same way. What is the capacity of alcohol here? Alcohol is in ratio 1:8, that means 1 divided by 8. It will be multiplied with 100. Now it becomes 12.5% here. Fine. So in the same way, concentration of water, it will also be 7/8 into 1000. So it will be 87.5%. That is water here. The percentage of alcohol and the percentage of water, this will be same as the concentration. Okay. And right now, the quantity of alcohol. What is the quantity of alcohol here? Total quantity is given, that is 2. Totally, that is mixture here, and we will multiply the ratio of alcohol here. Alcohol is in 1:8, so we will multiply with 1:8. So now it becomes 1/4 liter. This is the capacity of alcohol. And right now friends, what is water here? Total quantity is 2, and what is water here? Water, that is 7/8. Now it becomes 7/4 liter. This is the quantity of water here. Fine. तो इस क्वेश्चन में हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हम इसको एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे और विद इन टाइम इसको सॉल्व कर लेंगे. हमसे कुछ भी पूछा जाएगा पेपर में. ठीक है. अगर ये लिखा होता है ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है तो आपको टोटल 3 लिखने होते हैं, 3 बार प्रोसेस करना होता है. अगर यहाँ 3 लिखा होता है तो आपको टोटल 4 बार करने होते हैं. ठीक है. तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अल्कोहल और मिक्सचर का रेशियो 1:8 था, तो मैंने 1:8 लिख दिया. अब देखिए 1:8, 8 में से एक रेशियो तो एक अल्कोहल है, तो 7 क्या होगा? वाटर होगा. तो वाटर और मिक्सचर का क्या हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा. अब अल्कोहल वाटर का पूछा है, सारी चीजें सेम एज प्रीवियस हैं, तो हम यहां से निकाल लेंगे. ओके. वन मोर प्रॉब्लम फ्रेंड्स, दिस इज अ बिट डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन. ये पीछे वाले प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट रखती है. तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं. In 20 liter of water of alcohol, 20 liter bottle of alcohol, एक 20 लीटर की अल्कोहल शराब की बोतल है, in which 5 liter of the alcohol is replaced by 5 liter of water. मतलब आपने 5 लीटर अल्कोहल निकाला और 5 लीटर पानी डाल दिया, and after that 2 liter of mixture is replaced by 2 liter water. After that, again when you apply the next method, then you use 2 liter of mixture. You have taken out 2 liter of mixture and you replaced it by water, 2 liter of water. And after that you taken out 4 liter of mixture and you replace with 4 liter of water. Okay. Then find the ratio of alcohol and water to the new mixture. So friends, previously I have already told you, when you need to find out the alcohol is to mixture ratio, that means alcohol plus water, that means mixture. So it will be equals to 1 minus A divided by X, that is your total quantity, and 1 minus B divided by X, that is your withdrawn and total quantity, 1 minus C divided by X, where A, B and C are withdrawn quantity. And what is X here? X, that is total quantity. Fine. In the previous question we were repeating the same method, but right now the values of A, V and C will be different. So now
How to solve this question? See right now. 1 minus, first of all, we have taken 5 liter of alcohol, that means 5 out of 20. Next time we have taken out 2 liter, that means 1 minus 2 divided by 20. And third time we have taken 4 liter, that means 1 minus 4 divided by 20. Okay, so when you will solve such things, then you will get 3 by 4 here. Multiply with 20 ones are 20, 20 minus 2, that means 18 by 20, that means 9 by 10. Multiply with 20 ones are 20 minus 4, 16, 16 by 12, that means 4 divided by 5. So when you will solve this thing, then you will get 108 out of 200, or we can say 27 is to 50. So from here, what is the ratio of alcohol is to mixture? That is 27 is to 50. Right now question is asking about, then find the ratio of alcohol and water, not alcohol is to mixture. So if alcohol and alcohol plus water, this is in 27 is to 50 ratio. So we can say, what is water here? Water, it will be 23. Fine. So we can find out the ratio of, so see right now, the ratio of alcohol is to water, it will be 27 is to 23. I hope this question is to clear to you. ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या था कि पहले हम क्या करते थे, 5 लीटर हमने निकाला और 5 लीटर डाल दिया, फिर हमने फिर 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर डाल दिया वाटर, फिर 5 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 5 लीटर वाटर डाल दिया. मतलब ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे थे. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. इस बार हमने 5 लीटर अल्कोहल निकाला और फिर हमने जब वाटर डाल दिया, उसके बाद हमने 5 लीटर नहीं निकाला, फिर हमने 2 लीटर निकाला मिक्सचर, फिर हमने 2 लीटर पानी उसमें डाल दिया, फिर हमने 4 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर हमने 4 लीटर पानी डाल दिया. इसका मतलब ए, बी और सी की वैल्यूज जो है वो अब चेंज हो चुकी हैं, डायनामिक है. लेकिन x जो है वो तो टोटल क्वांटिटी सेम रही ना, क्योंकि जितना मिक्सचर मैंने डाला उतना ही मिक्सचर मैंने निकाला. ठीक है, तो यहां पर a, b और c की वैल्यूज पहली बार में 5 रखी जाएंगी, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, लेकिन ये 20 यहां पर सेम रहेगा. ठीक है, जब हम 20 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, 20 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है 15 बाई 20, तो इसको क्या लिखते हैं 3 बाई 4. इसी तरीके से 9 बाई 10, 4 बाई 5, यहां कितना आया 27 इज टू 50. मतलब कि अल्कोहल और मिक्सचर का रेशियो कितना आ गया 27 और 50 का आ गया. तो इसमें देखिए 50 जो है टोटल मिक्सचर है, उसमें से 27 अल्कोहल है, तो बचा हुआ कितना होगा वाटर होगा, तो वाटर 23 हो गया. क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, मतलब कि 27 और 23 इसका रेशियो हो जाएगा अल्कोहल और वाटर का. जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, काइंडली like this video if you really enjoyed this session and post your comments. And friends, don't worry about this channel, we will post few more videos of mixtures and alligation side by side. We have started another initiative, that is data interpretation, so don't worry. Okay, and kindly share this video among all the needed ones, especially those who can't afford the coaching classes. And friends, few people were asking about to contribute to our channel, that's why we have added a payment gateway InstaMojo लिंक. कुछ लोगों ने कहा था कि सर हम आपकी एकेडमी के लिए वॉलंटरी फी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो भी एजुकेटर्स आपकी एकेडमी में हैं. तो मैंने पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो के साथ में इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम को. आप इंस्टामोजो के लिंक जो मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है इस वीडियो में, फर्स्ट कमेंट जो होगा वहां पर जाकर आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं. फाइन, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव एनी क्यूरीज देन पोस्ट हियर, also on our Facebook page. Okay, thank you, have a nice day.